Okay, so let's do 53 question. The magnetic moment of NiCl for whole 2 minus is. Let's do it. First, let's write the compound. The compound is NiL for whole 2 minus. After this, we have to find the magnetic moment of it. So first of all, its name would be what? Its name would be tetrachlorido nickelate. Charge would be what? Charge would be x minus 4 is equal to minus 2. Okay, x minus 4 is equal to minus 2. X is equal to 2. So charge would be 2. Nickelate charge is 2. Okay, now let's see. Now we all know that Cl, chlorine, is a weak field ligand because of HOS. HOS means halogen. Halogen, if there is halogen, so here it's chlorine is the ligand. So it's a weak field ligand. And coordinate number is obviously 4. 4 bonds. And Cl, not like this, sorry. It would be tetrahedral structure. It would be tetrahedral structure. Why tetrahedral? Because it's a weak field ligand. Cl. Cl2 minus. Okay, let's just find the magnetic moment now. So if you just see Ni charge on it is 2. Okay, so Ni2 plus, and the atomic number of nickel is 28. Atomic electron form it would be 27. Okay, or 26. Okay, and we know that nickel has 3 argon 18. Argon has 18 electrons or 18 protons, and argon 3d 8, and 4s2 is just nickelate. So if we just remove 2 electron from it, it will be 3d 8 4s0. Okay, 8 4s0 and 4p0 and also 4d, but we will not use this thing. We don't need to use this thing. Okay, let's see. 3d is 8. 3d 8 would be 5 boxes. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4s0 is empty. Sorry, this is so big. 4s0 is empty. 4p0 is empty. 4d0 is also empty, but we don't need this. Okay, now 4cl would be attached, as chlorine is a weak field ligand because it's a part of HOS. Halogen oxygen. That's why chlorine would be a weak field ligand. If chlorine would be a weak field ligand, then what will happen is chlorine is a what? Chlorine is a weak field ligand. If chlorine is a weak field ligand, then what will happen is chlorine will not pair these 2 electrons up. Okay, so pairing will not occur. Chlorine will not pair this up. So it will just form here. There are 4 chlorines, so 4 coordinate pair would be formed here. 4 electrons would be donated by chlorine. 4 electrons would be donated by 4 pairs of electrons would be donated by chlorine. That means that 4 coordinate bonds gets formed. As we know that coordinate bond is basically donation of 2 electrons and making a covalent looking like bond. There are 2 electrons donated each of these 4 boxes. So now how many unpaired electrons there are? 2. So 2 whole into 2 plus 1 root over. So it would be 2 into 3, which would be root over 6. So answer is just a second. It would be 2. Sorry. So basically formula is m whole into root over of n whole into n plus 2.
Okay, where n is the unpaired electrons, and this is measured in bm. Bm means what? Bm is a unit of magnetic moment. So it would be what? Root over of 8 would be the answer. Okay, let's move to the next question. 54. 54 is telling you that write IUPAC name and hybridization of the complex CO(F6) whole 3 minus given atomic number of CO is 27. Okay, so let's first write the IUPAC name. Okay, IUPAC name is simple. It would be hexafluorido. I'm writing the IUPAC name first. So question is given COF6. Let's do it faster. 3 minus. So let's say charge of this charge of this of this transition metal cobalt is X minus. Let's make the charge minus charge of minus 1 is the charge of fluorine, and total charge is minus 3. So X has a charge of 6 minus 3 is 3. Okay, so let's write the IUPAC name of it. The IUPAC name would be what? The IUPAC name would be hexafluorido, and as this coordination pair has negative charge, so that's why it would be cobalt 8 and charge of cobalt is 3. Now after this what we will do here is, I've done this thing. Okay, after this what we will do here is we will then write our it is asking to write the hybridization of the given complex COF6 3 minus. So hybridization you can find it by this also. You can just see here that COF6 has what? COF6 has F. F is what? Halogen. Halogen is what? Weak field ligand. Weak field ligand means what? Weak field ligand. Weak field ligand means what? And it has a coordination number of 6. Because it has 6 bonds, right? I don't know. Telling it has 6 bonds because coordination number is 6. So if it has 6 bonds, coordination number is 6, and it has a weak field ligand, then the hybridization would be sp3d2. This you have to remember. Okay. So now let's move on to the next question. Okay, but I think you should now in this question only. We have not moved on to the next question. I'm telling you that I don't think they will give you mark just by knowing that it's a weak field ligand. That's why it would be sp3d2. Yeah, I think they can give mark, but if we will write everything, then I think mark would be given. So let's see. COF6, CO has plus 3. This is plus 3, and we thought that CO has 27 electrons. We don't need this. 20 means you don't need this actually, because it has what? It is basically argon 18 3d7 4s2. Okay, means argon. Then we will move to potassium, calcium. Sachin Tendulkar, very crazy man. It's a koi man. This is mnemonic. Okay, so this is 3d. It would be 3d57 and 4s2, but then we will lose 3 electrons, so 3d6. Okay. 3d what? 3d6. Okay, and after this we will write 4s 3d6. Then we will write 4s. Okay, so why we wrote 4s? 4 is 0 because it was 3d8. It was before it was 3d7 4s2. Now it is 3d6 4s0. And after this 4s0 we will write here. Okay, but you should know that 1s2, then 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. So 3/3 number has maximum till d. Okay, so d is done here.
but 4 has maximum of 4s, 4p, 4d, 4p, 4d, 4f. Okay, so we can make 4d here again, sorry, 4p here and 4d also, and then again 4d. 1 2 3 1 2 3 4 5. Okay, then let's sort this thing. So okay, okay, now as fluorine is a weak field ligand, fluorine is a weak field ligand. That's why weak field ligand, that's why it will not form bond here, but it will bond from here, and there are 6. So 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Okay, so 4 here. So this thing is what? This thing is sp3d2. Division 6% of electron from F minus and weak, its weak field ligand, number of unpaired electrons is 4. But we only need the hybridization, so it's sp3d2. You can just prove here. You can just prove that by here, this thing. Okay, also write hybridization and number of unpaired electrons. And number of unpaired. Okay, so how many unpaired electrons are there here? Number of unpaired is how much? Electrons is number of unpaired electrons is how much? Tell me. 1 2 3 4. Then let's move on to the next question. Write the hybridization and number of unpaired electrons of the complex CO6 minus atomic number of CO is 27. Okay. And let's see, predict the number of, so atomic number is written here. Okay. Predict the number of unpaired electrons in the square planar PTCN for 2 minus ion. So it's telling to predict the number of unpaired electrons in the square planar complex PTCN 2 minus. So let's predict the number of unpaired electrons in the square planar PTCN over 2 minus. Okay, so first of all, let's set the charge of PT minus 4 minus 2 x 2. Charge of it is 2. Now let's just make PT 2 plus electron configuration. Let's write this out. So PT 2 plus would be what? Okay, so PT is basically not the second. PT is basically xenon 4F14 and then 5D9 6S1. This is PT. PT2 plus would be 6S0 5D8. So basically you can also remember it by mnemonic. By xenon, you know, xenon atomic number is what? 2 8 10. Then at 18 plus 10, you can know what is xenon, you know already xenon electron configuration. Then move forward to 3 more electrons, add 3 more electrons and add the all F block electrons. Like I think there are 14 more electrons. Then you have to just remember the mnemonic la hafta 2 electrons, varna array 2 electrons, old style 1 electron, idhar 1 electron, pitai came. Okay, 1 electron. So 7 electrons. So you have to just do by that way. Okay. Basically, this thing is 8. Okay, this is 8. Sorry for if you can't see, this is 8. So let's move to PT2 plus. So let's see 4F14. 4F14 is still, it's completed. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7. Okay. Chill, it's completed.
Let's do it faster. Then we have 5d8. Five d8 is also nearly completed. This actually, I don't think this question will come. Okay, let's see more. 6 as 0 and then we have 6p. Okay, so let's see. We have c and 4, so we don't need that much. Okay, so how much is there? This is 1, 2, 5, 6, 7, 8. Okay, so now this thing Cn is what? Is carbon, nitrogen. So this carbon, nitrogen is what? Carbon, nitrogen is strong field ligand. So basically Cn is a strong field ligand, so it will form bonds. So it will just make this pair up. This will vanish out and then it will form here. 1, 2, 3, 4. So now the question is basically asking the number of unpaired electrons in the square panel ion. Okay, so there are 0 unpaired electrons. So answer is 0. And one more thing is this is coordinate number 4. This has coordinate number of 4 because 4 bonds are there. And one more thing about it is this is square panel structure. Only because it's a strong field ligand. That's what square field. If it was weak field ligand, it would have been what? It would have been tetrahedral structure. Okay, so question is asking that this compound is there. Okay, this compound C2, C2O4. You have to write the hybridization magnetic character of this compound. Okay, and CO has atomic number of 27. Atomic number. Then we have to write the hybridization first. So basically C2O4 is what? C2O4 is carbon and oxygen. Carbon and oxygen comes in what? Carbon and oxygen comes in both paramagnetic and comes in both PNC and HOS. Okay, I have a doubt in this question, so you may do. We will let if I just get the concept out here, then I will do this question afterwards, or else you can just please sorry, but you can just see it on YouTube, the solution of this question, if you don't know. Okay, now question is asking why. Next question is asking why is NiCl4 2- is paramagnetic, but NiCO4 is a diamagnetic. So basically NiCl4 is paramagnetic because NiCl4 is a Cl4 is a halogen. Halogen is a weak field ligand. If halogen is a weak field ligand, then it is paramagnetic. And if CO is carbon oxygen, so carbon and oxygen both are yaar. So if we will just see NiCl4 is paramagnetic, but NiCO4 is diamagnetic. Okay, so let's see the Ni electronic configuration. Okay, the nickel electronic configuration is what? It would be argon 18, then it would be 4s2 3d means 3d 4s2 and 3d, just a second, yeah, 4s2 3d what? 3d 1 8 3d 4s2. Okay, yes, 3d 4s2 argon 18. Okay,
So after this, if we just make it a nickel, you have to make it nickel. What? So this compound is NaCl. 2 minus oxidation number of nickel would be x minus 4 is equal to minus 2. So which implies x is equal to 2. So let's remove the 2 electrons from this this electron configuration. It would be argon 18, 38. So if we just make this thing, so it will only contain 38. 1, 2, 3, 4, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, and 4 is 0. 4 is 0. 38, 4 is 0. And also, as chlorine, which is halogen, as this thing is weak field ligand, as chlorine is a weak FiELD ligand, therefore pairing will not occur, and it will use 4s and 4p for what? Will be used for hybridization. But so this is the Ni plus 2 plus 1, and if you want just see, if you want to see NiCl4 2 minus, now let's see NiCl4 2 minus, what would be? Let's make it a little smaller. 88. And we have 4s. Sorry, man. 4s. And then we have 4p. So it will come here and here, and it's Cl4. That's why 1, 2, and it has a coordination number of 4 because it has 4 bonds. Coordination number 4. So it will form the tetrahedral structure. Because why tetrahedral structure? Because it's a weak field ligand, so tetrahedral structure would be formed. And after that, so 2 unpaired electrons. So if we just count the magnetic, so it's paramagnetic because it has unpaired electrons. Okay. Also, this is sp3. Okay, sp3. So basically here 4 electron pairs are donated by 4 Cl minus ions in the 4 Cl minus ligands, okay, in the coordination sphere, and it would form a tetrahedral structure because of sp3 configuration, and yes, it will form tetrahedral because of sp3 and not because of dsp2. dsp2 will lead to formation of square planar structure, and 4 electrons are donated here, and sp3 tetrahedral structure and weak field, and 4 Cl minus ligands are weak field ligands. Next is let's talk about NiCO4. So now CO is a strong field ligand, so pairing will form. Pairing will occur, and it will be diavalent. Okay, but if you want, let's write it down. Okay, so basically carbonyl is a neutral ligand, so Ni would be in ground state, which is NiO, and it would form 3D, and normally the normal configuration of nickel 4s. So 5 boxes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 4s2.
nickel would be what? 38. Nickel would be 38 4s2. Okay, so now after this 4s2 would be what? 4s2 would be what? So now अभी इसके बाद, so after this 4s4p would also be used. 4d 4f is also there. Okay, so 3d nickel has nickel electron configuration is like that only. Nickel is argon 18, 3d 8, 4s2. So 4s2, so 4s2 here. Now CO being a strong field ligand. Nowadays, let's write the structure of NiCO4. The bracket would be what? 3d 8 this one 8 and then 4s. Let's make it fast. 4s, tell me fast quickly. Okay, so now what will happen is these 2 electrons will shift here because CO being a strong field ligand will shift these 2 electrons and it will donate 4 electron pairs. Okay, basically donate 4 electron pairs to what? To 9. Okay, so this structure would be a square planar because it's a it will not be a square planar structure, it would be square planar structure, and it will be sp3 hybridization, and it is a strong field ligand. Okay, actually I have doubt in this question. You may see it on YouTube, the solution of this particular NiCO4. You may just see it on YouTube or someone else. Just copy it on Google Scanner and just paste it on Google and you will just see this question on YouTube solution. Just see that only. I don't know this particular NiCO4. I'm just making things easy for you. Just take a screenshot of this and scan it. Okay, so it's this question only. This question, just see it and scan it. Okay, so yeah, let's move on to next question. तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है आईयूपीएसी नेम, तो ये तो इजी है. आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्या? आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 58 का 1. देखिए 58 का 1 क्या है, तो हो जाएगा MnH2O होल 6 लिख देता हूँ अकेले कंपाउंड MnH2O SO4. तो पहले तो हमें क्या करना है, लिखना है पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज कौन सा है. तो हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली ये 2 माइनस होगा, ये प्लस होगा. तो पॉजिटिव चार्ज पहले लिखना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है. उसके बाद क्या करना है, लिगेंड लिखना है. लिगेंड लिखने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसे एक्वा से डिनोट करते हैं, एक्सेप्शन में आता है. तो हम लिख देंगे हेक्सा एक्वा, फिर लिख देंगे मैंगा. नीचे क्या मैंगनीज क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, इसलिए मैंगनीज लिख दिया. क्यों लिखा मैंगनीज बोलिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, या न्यूट्रल होगा तो वो भी लिख सकते हैं मैंगनीज, मतलब 8 नहीं लगाएंगे. उसके बाद क्या होगा ये कितना, इसका चार्ज कितना होगा, देखिए 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये 0 होता है चार्ज, तो 2 हो जाएगा. और इसको थोड़ा गैप दे के लिख सकते हैं, मैं तो गैप दे के लिखता हूँ. उस पर लिख देंगे सल्फेट. ठीक है, ये हो गया. ये क्या स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना. ठीक है, तो यही लिखा है सल्फेट से, स्मॉल में लिखने से बेटर है. ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसका बोला है ये हो गया. तो इसके बाद पूछा है व्हाट इज FeCN होल 6 4 माइनस, वाई इज FeCN होल डायमैग्नेटिक वाइल Fe6 माइनस इज पैरामैग्नेटिक. तो देख सकते हैं FeCN होल 6 4 माइनस जो है इसमें साइनाइड है.
साइनेट होता है कार्बन और नाइट्रोजन से बना होता है, और वो दोनों ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का है, मतलब वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, एक पीएनसी और एक है एचओएस हॉस, तो अगर इसमें आता है तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसमें आता है अगर तो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकंड, हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो अभी हमें पूछा है कि एफिशिएंट होल 6 और 4 माइनस डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन एफिशिएंट F6 3 माइनस का पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? क्योंकि अब देखिए एफ जो होता है वो आपका होता है, पहले सी एन देख लेते हैं। हाँ, सी और कार्बन और एन वो आता है पीएनसी में, तो कार्बन और अगर पीएनसी में आता है तो वो हो जाएगा वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवा देगा। अगर पेयरिंग करवा देगा तो अगर पेयरिंग करवा देगा तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अगर यहाँ पर लेकिन Fe F6 है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है पैरामैग्नेटिक? क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। वो पेयरिंग क्यों नहीं करवा पाएगा? देखिए, ये मैं ऐसा इसलिए डायग्राम नहीं कर रहा क्योंकि ये आपका 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। ये 1 मार्क का है, ये 1 मार्क है, तो मत कर ही रहेगा। तो फिर Fe F6 जो है वो ओके, फिर उसके बाद आपका एफ जो है ओके, तो उसके बाद क्या है, Fe F6 होल 3 माइनस आपका पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि आप देखिए फ्लोरीन अगर है तो हाइड्रोजन अगर है, एचओएस हाउस में आता है, अगर हाउस में आता है तो वो वीक फील्ड लिगेंड, अगर वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, सिंपल हो जाएगा, तो इसलिए वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद बोला राइट आइबीसी नेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, राइट आइबीसी नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आइबीसी नेम लिख देंगे, हमने किया भी था आइबीसी नेम, तो कोई बात नहीं, आइबीसी नेम लिख देंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो मार्क का है तो हम नहीं लिखेंगे कुछ ज़्यादा। ओके, तो पहले तो हम आईबीसी नेम लिखेंगे, उसके लिए 1 मार्क, और फिर हाइब्रिडेशन के लिए 1 मार्क। ठीक है, आईबीसी नेम क्या हो जाएगा, NaCO4 का आईबीसी नेम क्या हो जाएगा, वो देखिए CO आपका बोलते हैं क्या, पहली बात तो CO न्यूट्रल लिगेंड है, तो Na का कुछ चार्ज होगा नहीं, तो Na 0 हो जाएगा। तो पहले लिख देंगे हम, बोलिए, हम लिख देंगे कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल, और फिर उसके बाद निकल 8 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 8 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका स्पीयर का चार्ज 0 है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर का चार्ज 0 है, इसलिए नहीं लिखेंगे। अगर नेगेटिव होता लिख देते निकल 8, अगर नेगेटिव होता लिख देते निकल 8, लेकिन आज 0 है तो नहीं लिखेंगे। और चार्ज आपका 0 है क्योंकि सी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये हो गया। अभी इसके आईबीसी नेम के बाद हाइब्रिडेशन भी लिखना है, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली आप देखिए CO आपका है क्या, CO आपका क्या है, CO आपका क्या है, CO आपका सी में सी, यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, लेकिन अब मान लीजिए कि सी को हम जज करेंगे CO में, तो सी आपका किस में आता है, पीएनसी में। पीएनसी का है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है तो हाइब्रिडेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या बनेगा, DsP2, और यहाँ पे DsP2 क्यों बनेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसलिए। ठीक, तो DsP2 बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बोला है राइट आइबीसी नेम एंड हाइब्रिडेशन ऑफ द फॉलोइंग, हाइब्रिडेशन सिर्फ लिखना है, हमें एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, तो DsP2 बन जाएगा। इसके बाद ये हो गया। उसके बाद बोला है COF6 3 माइनस का, बोलो आइबीसी नेम क्या होगा, तो वो हो जाएगा हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 8, और इसके बाद इसका चार्ज कितना वो लिख देते हैं, x - 6 = -3, x = 6 - 3 = 3, तो इसके बाद यहाँ पे चार्ज लिख देते हैं 3। उसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम आईबीसी के बाद हम लिखेंगे हाइब्रिडेशन क्या होता है। इसमें F6 देखिए, F6 आपका एचओएस में आता है, हाउस में आता है, हाउस में अगर आता है तो वीक फील्ड लिगेंड, अगर वीक फील्ड लिगेंड तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। क्यों sp3 नहीं, sp3 नहीं होगा, sp3 D2 होगा। इसमें D2 क्यों आ गया, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, हाँ सही है। देखिए 5 और ये 6, कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अस राइट टू राइट द आईपीसी नेम एंड हाइब्रिडेशन ऑफ द complex. This is 2 marks, so half mark for IBC name and half mark for hybridization of the complex. Similarly, this is 1 mark. Okay, so it's asking write IBC name of name. Okay, so what would the IBC name of this? So
Cn3 minus, so this is anionic, there's anionic sphere, so Fe would be written as ferrite and has charge of what, minus x minus 6 equal to minus 3, so x equal to 6 minus 3 x, so it's 3, so it has charge of 3. Then it would be what, it would be after ferrite it would be hexacyanide has always been attached to this thing, an ion, at last ion because it's ion. Okay, so 60. After that is asking this half again half mark, hybridization of the complex. Okay, so what is the hybridization of this complex? Hybridization, this is Cn is coming in N and C. If it is coming in N and C, then it is a what, strong field ligand, and strong field ligand is a ligand in which pairing will not occur, and the pairing will not occur and it will be in diamagnetic in nature because pairing is not occurring because the way electron is paired. Sorry, what I'm actually explaining wrong. So strong field ligand pairing will occur, and it will behave as diamagnetic in nature because all electrons are paired. And after this due to this as it is strong field ligand, we have only have to write the hybridization. So as it is a strong field ligand, it would be dsp2, have a dsp2 configuration. Okay, so dsp2 configuration, right, hybridization name and hybridization of the complex FeCN6 whole 3 minus, so FeCN whole 6 3 minus has dsp2 configuration, and it has, sorry, again it's wrong, it has coordination number of 6. Why is coordination number of 6? Because it has, let's second, it has 6 bonds. So if it has 6 bonds, then it is coordination number of 6. So it would be what? It would be not dsp2, it would be d2sp3. Okay, 3 4 5 6. Okay, d2sp3. Basically you can see here it is only half mark, so I just write the coordination number. Okay, just write the, sorry, it is just write the hybridization, so it's written, write the IUPAC name, so just write the IUPAC name literally, and hybridization of the complex. So write the hybridization of the complex. Just write the hybridization of the complex. Don't worry about anything, any explanation to expect in a half mark question. The next question is, what is the difference between amine ligand and Chelting ligand? Okay, so basically if you will see what is amine ligand, these are the unidentified ligands containing more than one coordinating atoms called amine ligands. Means it has two amine ligands like NO2, it has N and O, it can donate through both N and O both, that's why it's amine ligand. Means it can donate, it can form coordination bond to one or more ligands. Okay, now one or more atoms of the ligand. Okay, these are the unidentified ligands. Means unidentified because it will form only one bond. These are the unidentified ligands containing more than one coordinating atoms. So it has more than one coordinating atoms. Means it can form coordination bond with two atoms, with more than one atom, more than one coordinating atoms. So these are the unidentified ligand. This is basically unidentified ligand containing more than one coordinating atom. So there are two coordinating atoms. It can form two bond. It can form any bond. Means it can form bond by two atoms. माने so it means that ये क्या कर सकता है ना, एक एटम होगा इसमें, एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कर सकते हैं, जैसे एन में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो सकता है, तो ओ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो सकता है, जिसको अमीन लिगेंड है, तो आप लिख सकते हैं बेसिकली दोनों एटम होगा तो हो जाएगा. इसके बाद बोला है एग्जांपल दिया है, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, एक ही आधा मार्क का ही है, तो एग्जांपल नहीं लिख सकते, एग्जांपल छोटा सा तो है. फिर बोला चेल्टिंग लिगेंड क्या है, बाइडेंडेंट और पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स विच कंटेन टू और मोर डोनर एटम्स. सो बेसिकली बाइडेंडेंट नहीं तो पॉलीडेंट लिगेंड जो कि दो डोनर एटम या उससे ज़्यादा डोनर एटम रखता है. These are positioned in such a way that 5 or 6 membered rings is formed.
लाइन फॉर एग्जाम्पल, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली चेल्टिंग लिगेंड का मतलब होता है वही चीज़ कि वो बाइंडेंट या पॉलीडेंट लिगेंड हो। और बाइंडेंट पॉलीडेंट लिगेंड में बेसिकली मैं आपको इससे अच्छा डेफिनेशन दिखाऊँ क्या, मतलब बाइंडेंट लिगेंड का एक सेकेंड दिखाता हूँ। मतलब अगर ये टॉपर का आंसर है, तो अगर बाइंडेंट लिगेंड हो वेराज बाइंडेंट लिगेंड हैज़ टू लेजिरेटिंग साइड्स, मतलब बेसिकली यही है कि अगर एमिन लिगेंड का एक्चुअल टू रेजिडेंट एटम्स होते हैं, एंड एमिन लिगेंड हैज़ टू रेजिडेंट एटम्स आउट ऑफ विच at a time only one bonds with the central metal atom। तो एक ही मतलब दो लेजिडेटिंग एटम होते हैं लेकिन एक ही बॉन्ड बनता है एट ए टाइम, तो वो हो जाता है एमिनेंट लिगेंड। लेकिन जैसे बाइडेंट लिगेंड या पॉलेंट लिगेंड में इसके दो या दो से ज़्यादा रेजिडेटिंग साइड्स होते हैं और साइमल्टेनियसली दो बॉन्ड या फिर दो से ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं, तो वो हो जाता है शेल्टिंग लिगेंड। ओके, whereas a bivalent ligand has two residing sites which it simultaneously bonds to central atom। फिर से बोलता हूँ, whereas a bivalent ligand has two residing sites which it simultaneously, आपको दिख रहा है ना, whereas a bivalent ligand has two residing sites which it simultaneously bonds to central atom। ओके, तो simultaneously बॉन्ड कर देता है, एग्जाम्पल भी लिखा है। लेकिन इतना ये हो गया, काम हो गया, ये हो गया, अच्छे से हो गया, ये याद रहेगा शायद। इस बार लिखा है आउट ऑफ COF6 COEN3 प्लस विच वन कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक मोर स्टेबल, सिर्फ ये आपको बताना है कौन सा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए F6 आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि F आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, F आपका हॉस में आता है। हॉस क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप नहीं करवा पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं करवा पाएगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा तो ये इसमें से कौन सा होगा, COF6 होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, पहला वाला COF6 होगा, ठीक है। और COEN3 की बात अगर हम करेंगे तो पैरामैग्नेटिक है या नहीं, ये जानने के लिए तो ये आप देखिए, आपका COF6 में से F6 तो मोनोडेंट लिगेंड है, लेकिन आप अगर EN देखेंगे तो इनका बाइडेंट लिगेंड है, तो ये -6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा और -6 टोटल होगा, -6 और टोटल चार्ज +3 है, तो +3 -3 तो +3 हो जाएगा इसका चार्ज। तो ये अगर +3 हो जाएगा तो CO3 प्लस का लिख लेंगे स्ट्रक्चर। CO3 प्लस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अगर CO3 प्लस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसके बाद हम बेसिकली क्या होगा इसमें, अगर आपका 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये बेसिकली बाइडेंट लिगेंड है, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे बेसिकली ऐसा, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जा रहा है, क्योंकि आप देखिए ये जो चीज़ है ये डोनेट कर दे रहा है इसमें, फिर ये आपका डोनेट हो गया, फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बना दे रहे हैं। तो उसके बाद जो है EN कितना है, 3 है, 3 मतलब 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की पहचान है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है, ये आपको एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डायमैग्नेटिक होगा, परमानेंट नहीं होगा, तो ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, पैरामेडिक का खत्म, मोर स्टेबल कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे मोर स्टेबल कौन सा होगा इसमें से, मोर स्टेबल अगर आप देखना चाहते हैं तो मोर स्टेबल तो मुझे नहीं पता, आप देख लीजिए नेट में, एक बार नेट पे जाकर देख लेते हैं मोर स्टेबल क्या होगा। तो यहाँ मिलेगा चेल्टिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल साइक्लिक रिंग कॉम्प्लेक्स देन इन्वेंटेड लिगेंड और नॉन चेल्टिंग लिगेंड्स। Since CON3 plus contains EN which is bivalent ligand, it is more stable than COF6 3-। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि चेल्टिंग लिगेंड जो है ये एक से मतलब ये मोर स्टेबल साइक्लिक रिंग, मतलब चेल्टिंग लिगेंड जो होता है, चेल्टिंग लिगेंड से बेसिकली ये आप CO का देखिए स्ट्रक्चर, ये आपका बेसिकली साइक्लिक होगा। EN क्या, इथिलीन डायमीन, नहीं तो आप बोल सकते हैं इथाइल 1,2 डायमीन, ऐसे ही बोल सकते हैं, वो आपका नाम है। तो चेल्टिंग लिगेंड जो है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली फॉर्म करते हैं मोर स्टेबल साइक्लिक रिंग। तो ये मोर स्टेबल साइक्लिक रिंग होता है, और ये तो फॉर्म ही नहीं करता आपका, ये F कहाँ फॉर्म करता है, COF 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं होगा डायग्राम, लेकिन ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये तो फॉर्म ही नहीं करता आपका रिंग, तो क्या फॉर्म नहीं करता, तो COEN3
होल 3+ जो है, तो वो जो है COEN3 होल 3+ कंटेंस EN विच इज़ वाइलेंट लिगेंड। ठीक है, तो क्या बोल रहा मैं क्या बोल रहा था, मोर स्टेबल साइक्लिक रिंग, ठीक है, स्टेल्टिक लिगेंड फॉर्म वन मोर स्टेबल साइक्लिक रिंग कॉम्प्लेक्सेस देन यूनिट लिगेंड और नॉन स्टेल्टिक लिगेंड। और फॉर्म नहीं करता यूनिट लिगेंड, नॉन स्टेल्टिक लिगेंड्स तो हो गए नहीं, नॉन स्टेल्टिक लिगेंड्स कभी भी फॉर्म नहीं करता। ठीक है, नॉन स्टेल्टिक मतलब मोनोडेंट लिगेंड। ठीक है, लिखा भी यूनिट लिगेंड या और नॉन स्टेल्टिक लिगेंड्स। तो सिंस COEN3 होल 3+ कंटेंस EN विच इज वाइलेंट लिगेंड, वाइलेंट स्टेल्टिक लिगेंड, इट इज मोर स्टेबल देन COF6 3-। तो बेसिकली अगर आपका वो हो जाएगा डाइडेंटेंट, ये मतलब बाइडेंटेंट लिगेंड अगर हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं हाँ बाइडेंट लिगेंड अगर हो जाएगा, बाइडेंट लिगेंड, हाँ बाइडेंट लिगेंड हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो नॉन स्टेल्टिक लिगेंड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा मोनोडेंट लिगेंड से। तो ये काम हो गया। फिर इसके बाद बोले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप याद रखिए, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आप सोचिए ज़रा, आउटर, एक सेकेंड गलत बोल दिया क्या मैंने, हाँ सही बोल रहा हूँ, वीक फील्ड लिगेंड अगर है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उससे क्या होगा ना, वो बाहर जाकर बॉन्ड बनेगा। वो मतलब क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो पेयर अप नहीं कर पाएगा ना, पेयर अप नहीं करवा पाएगा, जो होता है N-1D का जो है उसमें पेयर अप नहीं करवा पाएगा। और NS और NP और ND में वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डाउन कर देगा। तो पेयर अप नहीं, तो बाहर उसने आउटर में कर दिया, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा, अंदर पेयर करवा देगा, पेयर करवा देगा, N-1D में रहेगा। वो N-1D में उसने किया होगा कुछ काम, NS में तो होगा ही इलेक्ट्रॉन डाउन कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डाउन कर देगा, और NP में इलेक्ट्रॉन में डाउन कर देगा, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इसलिए। तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मतलब क्या यहाँ पे लिखना है, हाँ, तो PNC में बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद क्या बोला है, इनमें से कौन सा है, तो मैंने आपको जस्ट अभी बोला EN जो है वो, तो ये बेसिकली पैरामैग्नेटिक है, तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि F6 जो है वो नहीं दे पाएगा, मतलब हॉर्स में आ रहा है, हॉर्स में अगर आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो, नहीं सॉरी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला, तो COEN3 होल 3+ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन आता है। और अच्छा ये एक्सेप्शन नहीं है, COEN3 होल 3+ एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए EN आपका जो है इसमें क्या ये है एन अमीन है NH3, और एक अमीन है NH3, उसके बाद 2 हाइड्रोजन, तो बेसिकली इथेन 1,2 डैश डाइअमीन। ठीक है, डाइअमीन हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट करता है, हाइड्रोजन कंटेंट करता है, कार्बन कंटेंट करता है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन तो हमने किया ही नहीं है, मतलब देखिए यहाँ पे हॉर्स है, हॉर्स में हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, तो हाइड्रोजन तो वैसे भी काटे दो। तो इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन के अलावा क्या क्या है, कार्बन है, ठीक है सर कार्बन है, इसके बाद और क्या है, इसके बाद और क्या, नाइट्रोजन है, ओके ठीक है भैया। तो अगर नाइट्रोजन है और कार्बन है, तो कार्बन नाइट्रोजन किस में आता है, कार्बन नाइट्रोजन आपका PNC में आता है। PNC क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही है, तो ये एक्सेप्शन नहीं है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। फिर पूछा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है इनमें से, इन दोनों में से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, एक सेकेंड। इस बार पूछा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखिए है, ये चीज़ें मैंने सही बोला था मतलब उस समय। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, मतलब इसकी वीक फील्ड लिगेंड का अगर उल्टा कर देंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, आप पूछेंगे ऐसा क्यों है सर, मतलब ऐसा क्यों है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जिसका पैरामैग्नेटिज्म होता है। पैरामैग्नेटिज्म किसका होता है, जो वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवा पाता, तो उसका जो है, तो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो पैरामैग्नेटिज्म हो जाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो है स्पिन, वो सेम स्पिन का होता है, हाफ हाफ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसने पेयर अप नहीं करवा पाया, ये इसको उसने, ये जो आपका नई निकल है इसको उसने पेयर नहीं करवा पाया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, इसको पेयर नहीं करवा पाया। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे उसने पेयर अप करवा दिया, यहाँ पे जो भी करवा दिया उसने, तो इन दोनों को नहीं करवा पाया पेयर अप, तो इन दोनों को नहीं करवा पाया, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों स्पिन ऐड हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा।
तो बेसिकली हाई स्पिन हो गया, स्पिन आ गया ना, एक स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है किस में होता है ना, वो हॉर्स में होता है। हॉर्स क्या होता है सर, वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड क्यों होता है सर, वीक फील्ड लिगेंड मतलब वो पेयर नहीं करवा पाएगा। तो वीक फील्ड लिगेंड में आपका आ जाता है हाई स्पिन, मतलब देखिए वीक और हाई, यहाँ पे आ जाएगा आएगा लो स्पिन। लो स्पिन क्योंकि यहाँ पे मतलब जो स्पिन ही होगा नहीं, होगा ही नहीं स्पिन, क्योंकि अब बोलेंगे कैसे ऐसे क्यों, ये अब देखिए ये तो नहीं है, ये जैसे ये वाला, इसमें इसमें कहाँ ही है इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, सब सारे तो पेयर ही थे, मतलब एलोन पेयर नहीं है ना। तो अगर इसमें आप देखेंगे वैसे ही इसमें भी अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, ये वो 4 का था पिछले वाला। तो इसमें भी अब देखिए एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर नहीं है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर नहीं है तो बेसिकली उसका स्पिन ही नहीं आएगा। अगर स्पिन नहीं आएगा तो हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उसका है ही नहीं, मतलब स्पिन ही नहीं है, तो हाफ हाफ ऐड नहीं हो पाएगा वैसे ही। और ये याद रखिए कि हमेशा सेम होगा, मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा कि ऐसा एक है फिर ऐसा एक, ऐसा कभी हो सकता है क्या, पॉसिबल है, नहीं होगा। मतलब ये हाफ ये माइनस हाफ ऐसा ऐड होकर जीरो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन जो फील होता है ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5 और 1, हाँ 1 2 3 4 5, ये डी का मान लीजिए, कौन सा एक डी का है, 3D मान लीजिए। तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और अगर मुझे फिलअप यहाँ पे करवाना है, और मान लीजिए मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ से निकलेगा, 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 ठीक है। तो सारा इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे मान लीजिए हाफ फील्ड हो गया। आपको दिखा रहा हूँ, एक केस दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और मान लीजिए इसे भी निकाल दिया मैंने, तो अभी कितना कितना हो जाएगा, हाँ आपका स्पिन, तो एक 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाफ 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 4 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, हाफ प्लस ऑफ 1 हाफ प्लस ऑफ 1 2 हो जाएगा ऐड करने पे। और फिर आगे मैं अगर मैं बोलूँगा आपको एक मतलब इसमें बोलिए कितना होगा, तो इसमें होगा ही नहीं, इसमें तो अनपेयर सब सारा पेयर है, तो हाफ माइनस हाफ हाफ माइनस हाफ हाफ माइनस हाफ कहोगे 0 हो जाएगा। इसका अगर काट देंगे तब भी अब देखिए एक हाफ ही होगा, तो बेसिकली वैसा केस बनेगा ही नहीं कि मतलब मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ, ऐसा केस मतलब एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, वैसा एक केस बनेगा ही नहीं। हाफ एक ऊपर अपर हाफ स्पिन एक लोअर हाफ स्पिन, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसमें होगा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आप बोलिए किसमें होगा, आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होगा, मतलब वो आपका हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड में। तो वीक फील्ड लिगेंड में से कौन सा है, ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्यों अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड मैंने बोला था कि इसमें कार्बन है और नाइट्रोजन है, NH3 वाला। तो कार्बन नाइट्रोजन अगर है तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो इस पर पूछा है इनमें से कौन से का कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स का है वो डायमैग्नेटिक आउट ऑफ CO6 और CO, ये इसमें विच वन ऑफ कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक मोड स्टेबल, ये सारा पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है CO C2 ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन। तो CO C2O4 3 माइनस, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि आपका जो CO C2O4 3 माइनस, ये आपका हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि देखिए इसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों है। कार्बन ऑक्सीजन अगर दोनों हैं तो ये हॉस, अब देखिए हॉस में भी आ जा रहा है कार्बन, इसमें PNC में कार्बन है और ऑक्सीजन आपका हॉस में, तो दोनों नहीं हो सकता, तो एक ही होगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो पहला ऑप्शन तो हो गया। और डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि ये आपका एक्सेप्शन है, तो बेसिकली ये हॉस में आ रहा है, तो ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, बोलिए बोलिए, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ ये चीज़ देखिए कि अगर आपका CO लगा होगा इसमें इसके साथ, तो ये हमेशा वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, लिगेंड की तरह एक्ट, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना, क्योंकि ये आपका डायमैग्नेटिक तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है ना, हाँ सही बोला मैंने, एक्चुअली गलत बोल दिया था मैंने, माफ़ कर दीजिए। क्या करूँ मैं, एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया। तो देखिए ये जो चीज़ है ना CO C2O4 जो भी है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। किस केस में, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों कब है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तब होगा जब भी आपका C2O4 लगा होगा CO के साथ, जब भी CO के साथ लगा होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। बट लेकिन इफ़ CO से अगर अटैच होगा, हिंदी में लिख देता हूँ,
आप भी नोट करते चलिए, लिख देता हूँ पहले एक से। बट अगर ये और कोई एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, जैसे CO नहीं, और कोई एलिमेंट से जुड़ा होगा, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का होगा तभी CO से अटैच होगा, लेकिन अगर ये और किसी एलिमेंट से जुड़ा होगा तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो ये काम खत्म हो गया, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों डायमैग्नेटिक होगा भाई? क्योंकि अब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह अगर एक्ट कर रहा है तो क्या होगा? हमने बोला था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब वो पेयर अप नहीं करवा पाएगा। पेयर अप नहीं करवा पाएगा तो डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। सही बोल रहा हूँ? नहीं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा? वो पेयर अप करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा? ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इजीली पेयर करवा देगा, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसमें लोन पेयर है ही नहीं। डायमैग्नेटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता नहीं है। तो इसके बाद क्या है? और सुनिए, यहाँ पे पूछा है आउट ऑफ COF6 होल 3 माइनस और COC2O4 3 होल 3 माइनस विच कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, बोला है आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन, मतलब देखिए आउट ऑफ A एंड B विच वन इज, मतलब मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आउट ऑफ A एंड B विच वन कॉम्प्लेक्स इज, विच वन इज कॉम्प्लेक्स नहीं, जरूरत वैसे नहीं, ठीक, गलत इंग्लिश है वैसे। मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ A एंड B विच कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। मतलब यहाँ देखिए आउट ऑफ इतना ये और एंड ये, विच वन कॉम्प्लेक्स इज, तो देखिए मतलब बेसिकली बोला इन दोनों में से एक ही होगा। मतलब यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, तो आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे बोला है विच वन, तो इनमें से इन दोनों में से एक ही होगा। अगर आपको ये पता है, जैसे ये आपका COF6 है तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका F6 फ्लोरीन अगर तो हॉस हो जाएगा। हॉस है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अगर पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक है तो आपको पता चलेगा पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक है तो दूसरा ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे एक ही बोला है विच वन कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, तो एक ही बोला है, तो ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। वैसे याद तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, याद करने की आपको नहीं करना याद, तो इस क्वेश्चन में लेकिन तो यूज़ भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? मोर स्टेबल कौन सा है? तो आपको ये मैंने आपको बोला था कि अगर ये आपका C2O4 से दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा बाइडेंडेड लिगेंड। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे C डोनेट करेगा, O डोनेट करेगा, तो ये बाइडेंडेड लिगेंड हो जाएगा, तो स्टेबल ये हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, कहेंगे कि सर मतलब भैया कि ये जो मोर स्टेबल आपने बोला कि ये आपका बाइडेंडेड लिगेंड है इसलिए मोर स्टेबल है, तो पता कैसे चलेगा कौन सी दोनों में से बाइडेंडेड है? तो मैं बोलूँगा कि पहले तो C2O4 बहुत बड़ा दिख रहा है, मतलब C2O4 बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, मतलब दिख नहीं रहा कॉम्प्लेक्स, तो ये आपको पता तो चल जा रहा है कि बाइडेंडेड, मतलब बाइडेंड नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो मोनोडेंट नहीं है, मोनोडेंट नहीं है। और ये तो आपको पता ही है मोनोडेंट है, F6 है, 6 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा ना मोनोडेंट। वैसे और एक तरीका भी है पता करने का, जैसे नहीं वो पता आपको नहीं चल पाएगा। हाँ, तो वही चीज़ है कि आपको बड़ा दिख रहा है तो ये बाइडेंडेंट होगा ही, मतलब थोड़ा बाइडेंडेंट नहीं तो मोनोडेंट, मतलब मोनोडेंट नहीं होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये लेकिन कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, ये तो मोनोडेंट ही है। ये तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, आपको ये पता है मोनोडेंट है। ये बोला है आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन, तो एक ही पूछा है, तो इफ़ यू आस्क्ड वन ओनली देन वी विल एक्सक्लूड दिस because it is asking which one. So we know that out of this and this which one complex is, so which one means that only one, so we know that this is monodent, so this must be bidendant or any dentant means tilting ligand, so this is the more stable. Okay, out of this outer orbital complex पूछा है अभी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा? तो बेसिकली हमने क्या बोला था अभी जस्ट, डायमैग्नेटिक है। अगर डायमैग्नेटिक है तो वो हो जाएगा क्या? वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड? क्योंकि हमने पढ़ा था, देखिए डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि वो डोनेट कर पा रहा है, सर वीक फील्ड लिगेंड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। वो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा पा रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है नहीं बनेगा, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा? मतलब बेसिकली आप ऐसे सोचिए, जैसे एक वीक फील्ड लिगेंड, तो वो पेयर अप नहीं करवा पा रहा। अगर पेयर अप नहीं करवा पा रहा तो क्या होगा ना, उसमें वो कुछ काम नहीं करेगा। वो जो आपका इनर ऑर्बिटल 3D है, उसमें 3D या फिर जो भी 4D 5D जो भी है, उसमें मतलब ND है, N-1D है, उसमें कुछ काम नहीं कर रहा क्योंकि वो पेयर अप नहीं करवा पा रहा। तो वो बेसिकली काम करके SP और D में, तो SP और D तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली ऐसे याद रखिए, तो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा? जो कि पेयर अप नहीं करवा पा रहा। तो पेयर अप कौन सा नहीं करवा पा रहा? तो पेयर अप तो आपका वीक फील्ड लिगेंड नहीं करवा पाता। इसमें वीक फील्ड कौन सा है ना? जो आपका PNC है,
सॉरी, जो आपका हॉर्स है, हॉर्स में कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सा है? एफ, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बोला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन दोनों में से कौन सा होगा। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है आप सोचिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब बेसिकली डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। क्योंकि डायमैग्नेटिक नेचर क्यों होगा? क्योंकि अब मैंने जस्ट पहले ही बोला था इसके पहले, क्योंकि बेसिकली डायमैग्नेटिक अगर होगा तो पेयरिंग नहीं हो रहा, मतलब पेयरिंग हो जा रहा है। तो पेयरिंग अगर हो जाए तो हाफ माइनस हाफ कैंसिल होकर जीरो हो जा रहा है, तो लो स्पिन वो हो जाएगा। डायमैग्नेटिक वाला लो स्पिन होगा। और डायमैग्नेटिक मैंने कौन सा बोला था? यही बोला था मैंने, डायमैग्नेटिक शायद। ये तो पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है? अभी फिर से बोलूँ क्या? पैरामैग्नेटिक है इसीलिए क्यों है? क्योंकि ये हॉर्स मैटर। हॉर्स क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। हॉर्स मैच क्या है? हाइड्रोजन। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड अगर है तो वो क्या करेगा? पेयर अप करवा नहीं पाएगा, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो सही है। इसके बाद तो इसको बोला फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस राइट दी हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्पिन। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन ऐसे से देखिए। बोले फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस, फिर बोले राइट डी हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन लिखो, उसे एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ लिख दो राइट डी फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस। राइट क्या होता है? राइट का मतलब क्या होता है? मतलब लिखना राइट दी हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन लिखो इसका, और मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका लिखो, और स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इसका लिखो, सिर्फ लिखो। एक्सप्लेन बोला नहीं। एक्सप्लेन अगर बोलते तो हम करते कुछ डायग्राम वायग्राम, लेकिन यहाँ पे फिर बोला फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस राइट दी हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन लिखो, मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखो, एंड स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिखो। तो पहले हाइब्रिडेशन क्या होगा इसमें से आप बोलिए। हाइब्रिडेशन देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे अगर, तो पहले एच जो है और ओ है। तो एच किस में आ रहा है? हॉर्स में आ रहा है। नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एच तो किस में नहीं आ रहा ना। हाँ नहीं, किस में आ रहा है? ओ आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में आ रहा है? हॉर्स में। हॉर्स में क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। वैसे कुछ होगा नहीं। हाँ देखिए, मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे क्या है हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीजन आ जा रहा है। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, कुछ पार्ट फैमिली का पार्ट ही नहीं है, हॉर्स में आ रहा है। तो ये हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा आपका, अगर तो वीक फील्ड लिगेंड अगर होगा तो याद रखना है, मतलब तुमको याद रखना है वो sp3 हो जाएगा। ठीक है, sp3 d2, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 5 6। ठीक है, तो sp d2 हो जाएगा पहला आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पोर्शन हो गया। उसके बाद बोलो मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखो। मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो अगर हमने पढ़ा था वीक फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं करवा पाएगा, तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पहले लिख देंगे। ये एक हो गया, ये एक हो गया। उसके बाद लिखा है स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। स्पिन क्या हो जाएगा? स्पिन बोला है, स्पिन मतलब ऐड करके लिखना है स्पिन। ठीक है, तो स्पिन क्या हो जाएगा बोलिए। देखिए अभी ये स्पिन पूछ दिया, तो स्पिन के लिए डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो बेसिकली स्पिन कैसे निकाल सकता है? जैसे यहाँ पे आयरन दिया है, आयरन का आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर 16, तो याद थोड़ा सा हेल्प तो मिल गया है। आर्गन 18 होता है। उसके बाद हमने देखा मोस्टली क्वेश्चन 3D का ही पूछता है, तो 3D का याद रख लीजिए। उसके बाद आयरन क्या हो जाएगा? TD6 4s2। ठीक है, इसके बाद इसका 26 है एटॉमिक नंबर, ऐड करने पे आ जाएगा 26। 18 + 6 कितना होता है? 18 + 8 कितना होता है? 26। तो इस बार पूछा है ना, तो इसका कितना होगा इसमें जबका है, इसमें ऑक्सीजन नंबर कितना होगा इसका? x। ये आपका न्यूट्रल है तो 3 हो जाएगा ऑक्सीजन नंबर। तो ऐसे 3 निकाल दीजिए, 5 हो गया। तो अगर ये 5 हो गया, 5 अगर हो गया तो हाँ, तो अगर ये 5 हो गया तो इसमें कितने सारे, इसमें कितने हो गए ना? इसमें स्पिन कितना होगा इसका? अब बोलिए। स्पिन तो लिखना है आपको, ये रफ में करना है, ये लिखना ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं वैसे, मतलब लिखिए मत, क्योंकि देखिए भाई ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतना अगर लिखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा? आप बोलिए। सिर्फ यहाँ पे जस्ट बोला है राइट डी हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक एंड स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कुछ बोला ही नहीं है। तो स्पिन कितना होगा? लेकिन आप पीछे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ही लिखना है वैसे, ज़्यादा नहीं लिखना। तो स्पिन कितना होगा? 1 2 3 4 5, 5 5 बाई 2, 1 2 3 4 5 5 बाई 2 हो जाएगा स्पिन इसका। तो लिख दिया हमने, ये होगा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, so let's move on to another 2 mark question. So it's asking write the hybridization and the shape of the following complexes. So hybridization, just write the hybridization, don't explain it because it's only 2 mark question, and you have to also write the shape, so half. Okay, so let's write the hybridization. So basically you have to write, we don't need to explain. If it had been asking explain the hybridization, write and explain how the hybridization
of this complex is that, then we should have to just explain it. But it's first thing, it's 2 mark question. Second thing, it's just asking us to write hybridization and shape of the following complex. Okay, and 2 mark question. Okay, so CO, and you can just also just see hybridization half mark, shape of the complex half mark, and again hybridization half mark, shape of the complex half mark. So 1 1 2. So let's write the write the CO of 6 hybridization. Now what would be its hybridization? So its hybridization would be what? Basically, it's a weak field ligand of the group H Hos or it's Hos, yes, Hos. So halogen. So if halogen, it's weak field ligand. So if it's weak field ligand, means basically it can't. No, if it's weak field ligand, and it has coordinate number of 6, and it would be sp3d2. It would be coordination. It would be its hybridization 5 6. Okay, and the shape, it's asking to write the shape of the following complexes. So basically, you have to remember that if this, you have to draw sorry. We don't have to draw the shape. It's write the hybridization and write the shape of the following complexes. Just write down the shape, how it will look. So if it is sp3d2, so it will look, if it is sp3d2, remember, if it is sp3d2, then it would look square by pyramidal. Okay, square pyramidal, you understood what is square pyramidal? It's like this. It's C, first it's square, then it's बाईपिरामिडल. बाईपिरामिडल का मतलब क्या है? दो तरफा पिरामिड. तो यहाँ पे एक पिरामिड बन रहा है और नीचे एक पिरामिड बन रहा है, यहाँ से एक नीचे. तो स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गया ये, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल एम हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ हो गया. उस पर बोला है, देखिए इस पर क्या बोला है, उस पर यहाँ पे लिख देते हैं. इस पर बोला है कि निकल लिखो, फिर CN4, फिर उसके बाद 2 माइनस लिखो. तो ये आप देखिए, C आपका और N आपका किस में आता है? ये आपका आता है PNC में. तो ये आपका कौन सा है? ये PNC बोलिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बोलिए आप? D2DSP2. तो 4 हो जाए, 2 3 4. ओके, सॉरी नहीं, सही है, DSP2. इसके बाद 1 2 3 4. तो इसके बाद फिर हमें क्या बोलना है? हाइब्रिडेशन हो गया. उसके बाद हमें इसका डायग्राम बोलना है. तो इसका डायग्राम आप याद रखिए, इसका डायग्राम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, मतलब ऐसा है कुछ, स्क्वायर प्लेनर, ये आपको याद रखना है. तो ये हो गया खत्म. उसके बाद okay, so the next question says that write the state of hybridization. So basically we would write the state of hybridization. So basically means we would write the hybridization shape, IUPAC name of the complex COF6 3 minus. So basically so first let's write the hybridization. So F6, we all know that it's being repeated again and again. So we've done it. COF6 would be weak field ligand of what? HOF half, no sorry not half, it would be HOS, no, yes, Hos. Okay, Hos halogen contains fluorine. So if it contains fluorine, then it would be what? It would be weak field ligand. If it would be weak field ligand, then hybridization is what? Hybridization would be what? Tell me. Hybridization is sp3d2 because it has coordination number of 6. So first is sp3d2, then 5 6. Okay, then we have shape. Shape would be what? Shape of COF6 3 minus, as it is weak field ligand and it has a coordination number of 6. The shape would be square by pyramidal. Okay, next thing is pyramidal. Then our IUPAC name, it is asking IUPAC name, so it would be hexa fluoro cobalt, and you have to write the charge of it. And sorry, just a second, I'm just wrong. This would be hexa fluoro cobaltate, because the coordination pair has a charge of negative, that's why. And the charge of cobalt would be
So if you will see, it would be minus 6, minus 6, minus 6 would go to RHS, minus plus 6 minus 3 is 3. So it is 3. Okay, so this is done. It's last thing you have to write, as this thing is ion. So if you will see, this is 3 minus. So just write ion at the last. Okay. Similarly, again one more question, write the state of hybridization. So state of hybridization, you have done this thing, so let's not repeat it. So it's asking ID state of hybridization. So basically, CN is comes in CN comes in what? CN comes in PNC. So CN, if it comes in PNC, it is strong field ligand. If it is strong field ligand, then it has a shape of D2sp3. And why D2sp3? Sorry, why DSP3, DSP2? Because it has coordinate number of 4. So D1, S1, 2, 2, 4. And if you add it up, it would be 4. So hybridization is done here. Hybridization done. Okay. Hybridization done. Then shape. Shape would be what? DSP. You have also mentioned the shape there. So it would be what? It would be it would be square planar. Okay, square planar. Then it's asking again square planar. Sorry, square planar. Yes. And shape done IPC name. Let's write the IPC name. We hadn't written that. Okay, so it would be tetra cyanido. O would be attached as it is an anionic ligand. Then nickel late 8 5 at 8. Sorry, just spelling is wrong. Nickelate. Okay, nickelate and EL. Okay, NiCkelAte, and the charge of the nickel should be written. And it has a charge of minus 4 plus 2 minus 2. We'll see, it has minus 4. Minus 4 would go to RHS. So it would be having plus 4 minus 2 is plus 2. Sorry, plus 2. Then 2, and it's an ion, so ion. Okay. Tetra. Now CONH3 whole 6. Okay, so NH would be excluded because it doesn't comes in a Haus and or a PNC. So in PNC it comes, so it would be SP. It would be D. It has coordinate number of 6, so that's why it would be D2sp3. So if it is D2sp3, and then it has an shape of, shape would be square bipyramidal. Then IPC name would be what? IPC name would be hexamine, neutral ligand, hexamine, and it would be cobaltate, and it would have a charge of 3 because neutral ligand, amine is neutral ligand. So done this thing. And ion will be also written because the coordinate has charge of has a positive charge, and along with that there would be no cobalt 8 because it has a neutral, because it is a positive, it has a positive coordination here. Okay. And she's asking, write the hybridization shape and magnetic character of COF6 3 minus. So it's 3 mark question, but there are 2 bits, so just write. Okay, just write. Hybridization would be what? Hybridization would be it has a coordination number of 6, and it is a weak field ligand. If it is weak field ligand, and hybridization would be sp3. This hybridization would be 69A. Hybridization would be what? sp3d2. Then it's asking, write the shape of it. So shape would be square bipyramidal. Square bipyramidal. Then it is asking you magnetic character. Magnetic character would be what? As it is weak field ligand, so electron would be unpaired, remain unpaired. So it would be paramagnetic. Then it's asking you, write the formula of pentamine chloride cobalt. You don't need to do this. It's IPC question. Then it's asking you, next question is asking you, calculate the spin only magnetic moment of the following complex this. So spin only magnetic moment would be what? So you have to see, calculate. It is telling you to calculate. So spin only magnetic moment of the complex FeF6 whole 3 minus. So FeF6 whole 3 minus is weak field ligand. So if it is weak field ligand, then lone pair would be remain. And if you just look at it, Fe iron. Okay, Fe iron. Okay, iron. So it's I think it's 70. Okay, 70. Basically, if you will just see, it's telling you to write iron. Okay, FeF6 whole 3 minus Fe6 whole 3 minus. So we'll just see, this is as minus 6, this has plus 3, x minus 3 is equal to plus 3. Okay, minus 6, and this thing is minus 3. So 6 minus 3 is 3, 6 minus 3 is 3. It has charge of 3.
Okay, 3. So if you just draw the structure of, if you just see the iron, it is 3d6, 3d6, just I'm writing 3d6, and this is iron electronic configuration. Sorry, 3d6 4s2, yes. It is iron electronic configuration it is, but if you just remove 3 from it, 3d5, so 5 pairing, so 5 into half, 5 by 2 is the answer. 2.5 is the answer. Okay, so 2.5 is the answer. Then it is asking you next bit. It's asking you write IBC name. Don't do it. It's IBC name. You can do it. Okay. Write the complex this more stable. Okay. Why is the complex this is more stable than this? So basically you will write its repeated question. F6 is monoidal ligand and this thing is by Chelting ligand. Chelting ligand. You will write Chelting. See, Chelting ligand and so you will just see Chelting ligand and it's Chelting ligand. Just a second. Where is it? So basically. So basically, CO of 6 whole 3 minus is Chelting ligand and CO entry. Sorry, CO entry CO entry whole 3 plus is Chelting ligand and CO of 6 is a monodent ligand. That's why Chelting ligand is more stable. That's why CO entry whole 3 plus is more stable than CO of 6 whole 3 minus. Okay, so just we will write the Chelting ligand concept. Okay, you can just write it in fair. Okay, I'm just this is rough only to check. Okay, now it's telling using VBT predict the hybridization magnetic character of the complex NiCO whole 4. So basically you have to use VBT. This is VBT only. Predict hybridization magnetic character of the complex. So first we will write hybridization. Hybridization would be what? So it is CO. Okay, so this is a good question because no. So this is an exception. This is an just a second. Now, so this is an exception because carbon comes in PNC and oxygen comes in HOS. So what it would be? Weak field or strong field? So basically, you have to remember this is a exception and carbon will come. So carbon will attach to Ni and carbon is comes under PNC. So it is a what? It is a strong field ligand. Strong field ligand. Okay, strong field ligand 72A. If it is a strong field ligand, then it has a coordinate number of 4. And hybridization would be what? Hybridization would be DsP2. Then it's also asking us to write the magnetic character of the complex, so diamagnetic because it's a strong field ligand. So basically it would just pair up the electron. Then it's asking using, okay, so this is done. Right, hybridization don't need. Why is this is more stable than the complex this? So we have done this again. It's asking the same question. Basically, you have to write that COEN3 whole 3 plus is a Chelting ligand and CONH3 whole 6 is a monodent ligand. That's why it's more stable. As we know that Chelting ligand is more stable than monodent ligand. That's why COEN3 is more stable than CONH3 whole 6. And it's asking us this is amine neutral ligand. And that's our next question is write hybridization of magnetic character of the following combination of complexes. Okay, so okay, so this is basically okay. So we are telling hybridization magnetic character of the following complexes. Okay, so basically this is a 3-mark question, and if you will see, notice this is actually making only 2 marks. So you have to, I think, draw structures. It will be better if you draw structures. So let's see FH2 whole 6 whole 2 plus. So if we just see hybridization would be you say if you don't have time, then you will not draw structure. But if you have time, then draw structure because it's a 3-mark question and there are only 2 options, 2 bit and 2 do he has option do beta or and and it's asking hybridization and magnetic character. So hybridization magnetic character is there. So hybridization magnetic character is there. Then hybridization would be what? Hybridization would be what? Tell me. Okay, so hybridization half mark, my magnetic character half mark. So half plus half 1, half plus half 1. So it's only making up 2 marks. So it's 3-mark question. So if you will draw structure, it would be better. Okay. So but I'm telling you the if it was a 2 mark, I'm telling you that. Okay. So right hybridization. Hybridization would be what? Hybridization of FeH2O. H2O holds H2O. See, H is not included in any PNC or HOS. HOS stands for H stands for halogen in HOS. So HOS is hydrogen, hydrogen doesn't. So I will extrude hydrogen and oxygen is HOS. HOS means oxygen, O means oxygen.
So it's outer orbital complex. It means it's weak field ligand. If it's weak field ligand, an electron will pair up, and it would, and so it has a coordination number of 6. It would be sp3d2. Then it's telling you that a magnetic character. Magnetic character would be what? It would be paramagnetic because it is weak field ligand, para. Then this is phosphate. The second bit is telling you what? It's telling you this is coordination number 4, and then it is CN. CN is PNC. So it is DSP2, and it is magnetic character is di. Because it will strong field ligand. Okay. Then this is done. Then last question here comes is write the hybridization magnetic behavior of NiCN whole for 2 whole 2 minus. So it's basically telling you what would be hybridization and magnetic behavior of this. So hybridization would be, which is a strong field ligand PNC. So it would be, and it has coordination number 4. So it would be DSP2, and magnetic behavior would be diamagnetism because it is a strong field ligand. Okay, so thank you. Okay, just a second. Basically, see here in 72 number 72, FeH2 whole 6 a whole 2 plus. So Fe atom then at 26 ground state, Fe iron has this much electron. Fe2 plus 4s electron becomes vacant. Then FeH2O whole 6 compound has, and we know that it's a weak field ligand though, so it will not attract, it will not do any work in 3D subcell. So it will do work in 4s and 4p, making it sp2d2, which is sp2d2, and we have proved it is sp2d2. Then it's asking us whether it is para or di. It's para because we won't finish there. Then NiCN whole 4 Ca whole 2, so Ni. Okay, so similarly Ni2 plus has this much, and NiCN, then you have to also write the ground state. Then Ni means you can write, then Ni whole Cn whole 4 2 minus has this much, and NiCN is comes in PNC. PNC is what? Strong field ligand. So if it's strong field ligand, then it will not, it will just affect 3D electrons. So it will just what will it do is this this last cell, the last box of the 3D series, 3D, the last box of the 3D subcell electron would merge with the second last box of the 3D subcell electron, and it would pair up, and it has CN4. That's why four pairs. It would form 4 pairs. 1 2 3 4. Okay, this would be what? D2 DSP2. Okay, because it has quantum number of 4. And similarly here also H2 whole 6. So 1 2 3 4 5 6. So 6 pairs of electron would be donated by that ligand, and it has, and lastly it is amagnetic in nature because every electron is paired up.